विचारों के चिंतन और मंथन के लिए जाना जाता है। आज के इस देवेंद्र स्वरूप तृतीय स्मारक व्याख्यान में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, अध्यक्ष सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष श्रद्धेय अप्रतिम व्यक्तित्व सम्माननीय श्री राम बहादुर राय जी, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर एवं डीन कला निधि विभागाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र गौड़ जी, आप सबको मेरा मौलिक अभिवादन। बड़े हर्ष का विषय है, आज इस सभागार में श्री देवेंद्र स्वरूप जी के पुत्र रंजन अग्रवाल जी और उनकी पुत्री पुनीता अग्रवाल जी भी इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सभी मनीषियों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी गुरुवर देवेंद्र स्वरूप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आभार आप सभी का। आज के देवेंद्र स्वरूप स्मृति व्याख्यान इतिहास, स्मृति और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के निमित्त आयोजित किया गया है। आप आज के कार्यक्रम का आभासी पटल पर फेसबुक और यूट्यूब पर भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। श्री देवेंद्र जी एक शिक्षक, इतिहासकार तथा खोजी, सृजनात्मक चिंतन के बहुआयामी व्यक्तित्व, विचारक, पंचजन्य के पूर्व संपादक, संस्कृति के गहन अध्येता थे। देवेंद्र जी हमारे बीच थे, हैं और सदा रहेंगे। देवेंद्र जी एक ज्ञान योगी गुरु थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों की अनेक रचना की और 1900 से अधिक लेख उनके प्रकाशित हैं। मेरी तरफ से कुछ शब्द और श्रद्धा सुमन। सोचता हूँ गर मेरे सपने तुम्हारी सोच में उगाएं, सोचता हूँ गर मेरे सपने तुम्हारी सोच में उगाएं, तो उनमें पानी डालते रहना, तो उनमें पानी डालते रहना, एक ना एक दिन वो अवश्य खिलेंगे। जिन बीजों को हमने एक साथ बोया है, जिन बीजों को हमने एक साथ बोया है, वो हर दिन एक होकर ज़रूर खिलेंगे। श्री देवेंद्र स्वरूप जी ने अपने व्यक्तिगत संग्रह में से 8500 पुस्तकें एवं समसामयिक पत्रिकाओं को लोकानुरूप जनहित के लिए उपहार स्वरूप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ग्रंथालय को प्रदान किया है। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को आने का निमंत्रण दे रही हूँ जो न केवल एक लेखक हैं, कवि, चिंतक, कर्मठ प्रशासक, जिनकी सोच
नूतन और पुरातन के बीच सेतुबंध बनाती हुई आज की युवा पीढ़ी को नए आयाम प्रस्तुत करती है। जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां उनका सोचना आरंभ होता है। जिन समस्याओं के धागे उलझ जाते हैं उन्हें सुलझाते हुए नजर आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से आग्रह करती हूँ कि वे अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सभी का विधिवत स्वागत करें तथा हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी को भाव प्रांजल वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के माननीय अध्यक्ष और इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, आज के इस सारस्वत आयोजन के वक्ता हमारे परम मित्र और इतिहास के अध्येता प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, कला निधि विभाग जिसका कि अब नाम बदलकर विद्या निधि विभाग हो गया है, इसके अध्यक्ष डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, विशेषकर आदरणीय देवेंद्र स्वरूप जी के परिवार के सभी सदस्यगण। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जब आदरणीय देवेंद्र स्वरूप जी का पूरा संग्रह अपने यहाँ पर स्थापित किया था, उसी समय ये संकल्प किया था कि हम एक स्मारक व्याख्यान प्रतिवर्ष करेंगे। ये इस स्मारक व्याख्यान का तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष माननीय सुरेश सोनी जी का यहाँ पर व्याख्यान हुआ था। दूसरे वर्ष चूँकि कोरोना की त्रासदी में हम सब लोग थे, इसलिए ये स्मारक व्याख्यान वर्चुअल मोड में आदरणीय बनवारी जी ने दिया था। इस बार हमारा ये प्रयास था कि अब चूँकि कोरोना की त्रासदी से हम लोग प्रायः उबरते जा रहे हैं, इसलिए ये व्याख्यान एक बार फिर से भौतिक रूप से हो, फिज़िकल मोड जिसे कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमने इसे लाइव भी किया है ताकि जो लोग वर्चुअली इसे देखना चाहें आभासी माध्यम पे वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए इस नाते से मैं आभासी माध्यम में जो लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। दरअसल आदरणीय देवेंद्र स्वरूप जी का जब संग्रह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आया तो ये एक ऐसी परंपरा का सूत्रपात था जो परंपरा उस समय तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से अछूती थी। अछूती इसलिए थी कि इस कला केंद्र के जो पूरे के पूरे कला निधि का जो संग्रह था, संकलन था, वो कला संस्कृति पर केंद्रित तो अवश्य था, लेकिन उसे तात्कालिक भारतीय इतिहास और दर्शन के संदर्भ में बहुत अधिक सामग्री। चौथा हो गया, हाँ क्षमा करें, मैं बिल्कुल भूल गया। पिछले साल जेके बजाज जी का हुआ था, मैं त्रुटि सुधार करता हूँ और इसका भी दोष मैं कोरोना के सिर पे ही मढ़ देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लॉकडाउन और लॉकअप और ओपन ये सब हुआ है कि स्मृति भ्रम होने लगा है। मैं इसका दोष अपनी आयु को नहीं दे रहा हूँ, ये अच्छी बात है। एक ये भी सोचा कि हम सबके जीवन से 2 वर्ष कम ही हो गए हैं, ऐसा सब मान के चल रहे हैं, इसलिए जो जहाँ है वो वहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जब संग्रह प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी का आया था तब हम सबके मन में ये था कि इस संग्रह के माध्यम से कला केंद्र की एक नई दिशा और एक नए आयाम को हम सब लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नई दिशा और वो नया आयाम ये है कि भारत केंद्रित विचार बनाना, भारत केंद्रित नैरेटिव जिसे आजकल शब्द कहा जाता है, उस भारत केंद्रित नैरेटिव को बनाने में देवेंद्र स्वरूप जी का ये जो पूरा का पूरा संग्रह है, इस संकलन है, हमें बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही हम इस बात की भी निरंतर खोज करते रहे हैं कि देवेंद्र स्वरूप जी का जो कुछ लिखा हुआ है और जो कुछ छपा नहीं है, ऐसे तमाम साहित्य पर काम करने के लिए हमें अध्येता प्राप्त हों, शोधकर्ता प्राप्त हों, जो उस सारे साहित्य को पढ़कर और उसमें से नई चीज़ों को निकालने की कोशिश कर सकें। हालांकि हमें उस प्रयास में अभी बहुत सफलता नहीं मिली है। हमने 2 बार ऐसी चयन प्रक्रिया की है जिससे हमें कुछ ऐसे अध्येता प्राप्त हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसा योग रहा है कि जिनका भी चयन हुआ है उन्हें शायद इससे बेहतर अवसर प्राप्त हो गया, इसलिए वे उस काम में लग गए। लेकिन हम लोग निरंतर इस खोज में लगे हुए हैं कि हम उस काम को कर सकें। और ये सब इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम अपने
अपनी दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास, अपनी दृष्टिकोण से लिखे हुए दर्शन को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक हम हमेशा एक सुरक्षात्मक भूमिका में रहेंगे, एक डिफेंसिव मोड में रहेंगे, और हम तब तक दूसरों के प्रश्नों का सिर्फ उत्तर ही दे पाएंगे, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए। होना ये चाहिए कि नैरेटिव हमारा हो, विषय हमारा हो, और दूसरे उसको जस्टिफाई करें। क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो समृद्ध दर्शन परंपरा है, उसके हिसाब से ये भारत के पक्ष में होना चाहिए कि भारत अपना नैरेटिव विश्व के सामने प्रस्तुत करे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही, जिस तरह की विचार पद्धति रही, और जिस तरह का सामाजिक वातावरण रहा, इसलिए उस नैरेटिव के बिल्डिंग को समाज में स्थापित करने के लिए जिस तरह के परिश्रम हमें करने चाहिए थे, शायद वो या तो परिश्रम नहीं हुए, या परिश्रम हुए भी तो उसका हमें उतना फल नहीं मिला। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम निश्चित तौर पर अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि हम उस विचार को एक बार फिर से खड़ा कर सकें, और उस विचार के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, और विशेषकर भारतीय इतिहास के संदर्भ में नई बातों को, नई अवधारणाओं को, जो शाश्वत अवधारणा हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज में स्थापित कर सकें। और इसीलिए जब आज के व्याख्यान के लिए वक्ता और विषय का चयन हुआ, तो हमारे मन में आया कि हम हमारे मित्र और इतिहास के एक परम विद्वान प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी से आग्रह करें कि वे देवेंद्र स्वरूप जी को स्मरण करते हुए इस विषय पर प्रकाश डालें। और आज जिस विषय पर वो हमारे सामने अपनी बात रखेंगे, वो विषय है इतिहास, स्मृति एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का प्रमाण अगर आपको किताबों में ही मांगा जाए या शिलालेखों में ही मांगा जाए, तो उस श्रुति और स्मृति का क्या होगा, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी वैदिक परंपरा वर्षों से लेकर आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है, और उस परंपरा का भी अपने आप में साक्षात्कार होता रहा है। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भी आज का व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रुति और स्मृति को भी ध्यान रखना, और इस तरह से इतिहास को किस तरह से संजोना और पुनर्निर्मित करना, ये बहुत आवश्यक है। कुछ समय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने शब्द अच्छा नहीं है, इतिहास के पाठ्यक्रम को एक बार फिर से बनाने की प्रक्रिया में मैं भी शामिल हुआ था, और मैं महसूस कर पा रहा था कि ये इतिहास को, शाश्वत इतिहास को समाज के सामने रखना कितना बड़ा दुष्कर कार्य है, कितना जोखिम का कार्य है। और वे तमाम संस्थाएं भी जो इस तरह की मानक संस्थाएं हैं, वो भी ऐसे साहसिक कदमों को बहुत अच्छी तरह से एप्रिशिएट नहीं करती, ऐसा भी मुझे लगा। मतलब दूसरों के मन में प्रश्न चिन्ह आए तो अलग बात है, अपनों के मन में भी कई सारे प्रश्न चिन्ह आते रहे हैं। उस प्रक्रिया में आदरणीय हीरामन तिवारी जी भी कुछ समय मेरे साथ रहे हैं, इसलिए वे भी इस बात के साक्षी हैं। तो इसलिए इतिहास को जानना, इतिहास को समझना, और दुर्भाग्य ये रहा कि इतिहास शिक्षण जिस तरह से हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही नॉन सीरियस ढंग से हुआ, उसने भी इतिहास का बहुत बड़ा नुकसान किया है। दरअसल इतिहास हमारी पहली प्राथमिकता का अध्ययन होना चाहिए था, और वो पहली प्राथमिकता का अध्ययन न होने से जो हमारे देश ने नुकसान भुगता है, उसको भी महसूस करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के परिदृश्य में आज का व्याख्यान हम यहाँ सुनेंगे, जिसके लिए मैं प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी को उनका स्वागत भी करता हूँ, और उनको अनेक अनेक धन्यवाद भी देता हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी हमेशा हमारे ऐसे आयोजनों में हमारे पीछे संबल बनकर खड़े हुए हैं, और वस्तुतः देवेंद्र स्वरूप जी का जो संग्रह आज कला केंद्र में हम देखते हैं, वो आदरणीय राय साहब की ही प्रेरणा है, और राय साहब के ही मार्गदर्शन में वो समूचा कार्य हुआ है। हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ पूरे उत्साह से इस तरह के आयोजनों को करते हैं। आप सभी आज इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, और हम सब आशा करते हैं कि जिस मार्ग पर चलने के लिए आदरणीय देवेंद्र स्वरूप जी ने हमें प्रेरित किया है, हम उस मार्ग पर आगे चल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार गुरुवर आपका, आपके अनुकरणीय विचारों के लिए। अब मैं कला निधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अपनी कर्मठता और चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ नई तकनीक के प्रणेता और ग्रंथालय में विचारों की भावभूमि में क्रियाशील हैं। मैं निवेदन करती हूँ आज के इस अवसर पर। नमस्कार। चतुर्थ देवेंद्र स्वरूप स्मारक व्याख्यान, जो कि हमारे मार्गदर्शक
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता में, हमारे सदस्य सचिव डॉक्टर शशिधर जी की उपस्थिति में प्रोफेसर हीरामन तिवारी द्वारा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका विषय है हिस्ट्री, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, इतिहास, स्मृति एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। अगर हम हमारे चारों मेमोरी लेक्चर्स देखें तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि चारों का ही जो हमारा टॉपिक रहा है वो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर रहा है। और उसके पीछे हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनका मानना है कि जो देवेंद्र स्वरूप जी ने जो कार्य किया, जो उनकी जितनी भी हमारे पास जो संग्रह है, इस पे बहुत काम किया जा सकता है और इस श्रेणी में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब किसी भी हिस्ट्री या फिर हम जो किसी भी कंट्री की सिविलाइजेशन, उसके कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम और सोर्स लाइब्रेरीज और आर्काइव्स हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो कि एक यूनिक अनोखा कार्य है कि हमारी जो विद्यानिधि है, इसमें जो दो मुख्य डिपार्टमेंट हैं, एक तो संदर्भ पुस्तकालय और दूसरा हमारा जो कल्चरल आर्काइव है, दोनों में ही मिला के हमारे पास कम से कम 70 ऐसे एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जिनकी पर्सनल लाइब्रेरीज और पर्सनल कल्चरल आर्काइव्स को हमने संयोजित किया है। शायद ही आपको हिंदुस्तान में ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा। और जो हमारी रेफरेंस लाइब्रेरी है, उसी में श्री देवेंद्र स्वरूप जी का कलेक्शन, पर्सनल कलेक्शन हमारे पास है। उसके साथ साथ हमारे पास 24 और पर्सनल कलेक्शन हैं, जिसमें कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, प्रोफेसर नामवर सिंह, ठाकुर जयदेव सिंह, श्याम बेनेगल और बहुत सारे, डॉक्टर कपिला भाषण, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो किसी भी स्मारक व्याख्यान का जो हमारा मकसद है, जो कि हमने जो पर्सनल संग्रह इकट्ठे किए हुए हैं, उनको कैसे हम आगे लोगों तक पहुंचाएं, उनके बारे में जानकारी दें। तो आज मैं अपने जो हमारे स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन और कलेक्शन के बारे में, देवेंद्र स्वरूप जी के बारे में आप सभी बहुत भली भांति परिचित हैं। मैं आज के स्पीकर प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी को I would like to introduce him. He is currently chairperson at the Center of Historical Studies in School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. He is basically a PhD in Sanskrit, Indian philosophy from Delhi University, and he has been honored with several awards, and also he was Heinrich Zimmer's Chair Professor of Indian Philosophy and Intellectual History, and also at Ruprecht Karls University, Heidelberg, Germany. He has received an Excellence Award from Asia and European in a global context, and he has also worked as a fellow at the Israel Institute of Advanced Studies, and also the Hebrew University of Jerusalem, Israel, and he was EuroISIS Senior Fellow in 2014-15. His principal areas of specializations are Indian philosophy of language, with special emphasis on epistemology and metaphysics, Sanskrit language and literature and tradition. He also works in the area of India's intellectual history from ancient to medieval period. So with this brief introduction about eminent speaker, and more than that, I have the honor of working with him when I was in JNU, so I feel honored in just introducing him. And now it's over to my colleague Yati to invite. Thank you very much. धन्यवाद सर। किताबें हर जगह सफ़र करती हैं, किताबें हर जगह सफ़र करती हैं, कभी वजूद हथेली पर तो कभी दबोच लेती हैं, कभी तलाशती हैं पहरेदार तो कभी हिदायतें देती हैं। किताबें हर जगह सफ़र करती हैं, कभी काट देती हैं चोरों के पर तो कभी शब्दों की तस्करी करती हैं, कभी रीढ़ की हड्डी बन खड़ा कर देती हैं तो कभी बिजली की तारों की तरह जालिम चिंगारियों में कैद कर लेती हैं। किताबें
हर जगह सफ़र करती हैं। कभी तर्कसंगत बातों से फासले तय करती हैं, तो कभी दोस्ती, तो कभी पहरेदारी की सख्त खामोश रखती पालती और पोसती हैं। खुद को सजाने के लिए कभी घर, कभी दुकान, तो कभी अपार्टमेंट ढूंढती हैं। कभी प्रकृति, तो कभी हादसों की शिकार होती हैं। किताबें हर जगह सफ़र करती हैं। झुंड में छपे हुए शब्दों के जाल बुनती हैं। कभी दवा, तो कभी दुआ बन जाती हैं, क्योंकि किताबें हर जगह सफ़र करती हैं। समुद्र में गोता सभी लगाते हैं, लेकिन मणियाँ किसी किसी के हाथ आती हैं। तो आज हमारे हाथ भी एक मणि आई है, जो मंच पर विराजमान हैं विद्वान प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी। मैं उन्हें आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू मैम। परम आदरणीय श्रद्धेय और इस न्यास के अध्यक्ष श्री राय जी, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। हमारे परम श्रद्धेय मित्र और यहाँ के मेंबर सेक्रेटरी कर्ता धर्ता प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, और हमारे पुराने मित्र जैसा भी इन्होंने बताया प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी, परम विद्वान हैं कई भाषाओं में, और यहाँ पे इनके पास बहुत दायित्व है। इसके साथ साथ मैं अनुग्रहित हूँ इस बात के लिए कि हमारे एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ मित्र आए हुए हैं। प्रोफेसर मज़हर आसिफ जो डीन हैं वहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के, प्रोफेसर ब्रजेश तिवारी जो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हैं, हमारे कुछ मित्र हैं। मेरी पत्नी, धर्मपत्नी सर्वांगिनी अनु खन्ना भी आई हुई हैं मेरे साथ। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। मैंने इनसे कहा कि वहाँ जाओगे तो मैं डरूंगा, कैसे बोलूँगा, ये नहीं होते हैं तो मैं खुल करके बोलता हूँ, लेकिन ये भी एक अच्छा अनुभव होगा। और विशेषतया मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि आज स्मृति शेष और स्मृति पर व्याख्यान भी है। श्री देवेंद्र स्वरूप जी के परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। It is an honor indeed to be asked to speak today in memory of Shri Devendra Swarup ji, a person who devoted his life to understanding India, writing about its cultural and intellectual heritage, and through his writing and social work has given direction to India's intellectual precepts and practices. I'm very grateful to Professor Sachchidanand Joshi ji, the Member Secretary of IGNCA, for giving me this privilege, a privilege I'm not sure I fully deserve, let alone qualify for it. But the affection and care with which Professor Joshi extended to me this opportunity puts me in deep debt to him. Thank you, Bhai Sahab. I'm very thankful to Professor Ramesh Chandra Gaur for organizing this event, for this sweet introduction, and to all those who are associated with it. Most importantly, I am thrilled to be standing before you under the intellectual shadow of Shri Ram Bahadur Rai ji, under whose able and careful guidance the activities of this organization are being crafted, curated, and marshalled in the interest of India's intellectual traditions. So thank you, sir, for having me here. The intellectual tradition of this land, the land of seekers, not just of the beholders of wisdom, of truth, of knowledge, of righteousness, has been known and celebrated. It is also my passion as a student of history of ancient Indian literature and philosophy. Perhaps you will forgive me if I began by drawing inspiration from a Sanskrit verse from ancient India, which goads us all to think of India that it is, not that it was. Etat desha prasutasya sakashadagra janmanah swam swam charitram shiksheran prithivyam sarvamanavaha. People have been striving here to seek knowledge and learning from the intellectual leaders of this ancient land who have dedicated themselves to setting standards
of a great character. This is what I wanted to communicate when I said a moment ago how Shri Devendra Swarup spent his life, how he served his nation. Should we not strive to walk on the path beaten for us by our elders, our intellectual leaders? Didn't Bhagavan Krishna say to Arjuna, Yadyad acharati shrestha tattad deve tarojana sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. Whatever a great man or woman does, people other than gods receive inspiration from that. And whatever standard then such a leader sets, the entire world begins to follow it. Lokas tadanuvartate. The life of such a soul becomes then the norms for the society. Uttishta jagrata prapya varan nibodhata. Kshurasya dhara nishita duratyaya durgam pathastat kavayo vadanti. Rise, awake, and get hold of the wise from whom to learn, because the path of knowledge of freedom is arduous, like a high, invincible fort, even mountain, like walking on a sharpened edge of a knife. Tulsi has also said, Jnana pantha kripana kaidhara parat khages na lage bara. Why do I quote this verse here? I do so to invoke Swami Vivekananda because he was very fond of this beautiful mantra from the Kathopanishad, which he would often use to exhort the people of India, especially the youth, to shake them up from their slumber. Just think about the choice of Swamiji. This mantra was given to Nachiketa, the 12-year-old boy who was facing the death literally. In fact, he was standing before Yama, the death, listening to him, asking him questions which were difficult to answer, even for the god of death. Great souls have appeared on this beautiful land of ours, and Swami Vivekananda ji was truly a great, rare individual in that sense. His soul was fired, and he inspired us all, shook us all to prepare ourselves to do good for our society, our country. Swamiji belonged to that intimidatingly brilliant tradition of sages and yogis who drew inspiration from our Adi Yogi, Shankara, and the charming Yogeshwara, Krishna. Bhagavan Krishna speaks to Arjuna, shows him the path of knowledge, wakes him up when Arjuna suffers from a massive crisis of dharma, from crisis of his avowed duties, faces the darkest predicament of his life. He can't hold his Gandiva in his hand. He feels giddy. His legs and knees begin to shake from the fear of mortal and worldly loss, the loss of his kin and kingdom, because he wants to retrieve it. And in the process of this restitution, Arjuna fears the loss of his friends, even his own teacher. It is at that time that he is obliged by Krishna. He says, Gandivaha sansrute hastat tvakchaiva paridahyate nacha shakno vyavasthatum brahmati vachame manaha. That is the tradition. When you are in crisis, there will always be some wise person to guide you. The point is that we need to look for such a guide. And therefore, this lecture, this day, when we celebrate the memory of Shri Devendra Swarup ji, we need such guides. We have always had it, and I'm sure in future too, we will have these guides. Similarly, Swami Vivekananda was a sage who at the darkest hour of our shackled country goads the sleeping giant that India was then to guide her onto the path of awakening. And he found no better audience than the youth of India. Swamiji had immersed himself in the great philosophical traditions of Upanishads. And he used that wisdom to ask the youth to become self-reliant, to make their own future. So what is the relevance of the narration? अभी भाई साहब ने कहा कि हमें
नैरेटिव को बदलने की आवश्यकता है, परिवाद को बदलने की आवश्यकता है। संवाद तो होता ही रहता है, जब संवाद परिवाद में परिवर्तित हो जाता है तब उसे हम एक यूनिवर्सल नैरेटिव कहते हैं। उस परिवाद को बदलने का एक ही माध्यम यही नहीं है कि हम मात्र अपने अतीत में झांकें, लेकिन अतीत में झांकते हुए हम ये देखें कि क्या क्या हुआ। बहुत विशद विषय है, इसलिए मैं संक्षेप में इंगित कर रहा हूँ कुछ ऐसे तथ्यों को। सो देयरफॉर Swami ji wanted that we must become self-reliant. Unless we are self-reliant, in terms of our knowledge, in terms of everything, we cannot really face the other. If at all we have the other, first of all, he would say there cannot be any other. But the world is as it is. As one of my favorite authors, V.S. Naipaul, says, the world is what it is. You can't really do much about it. So what is the relevance of this narrative or narration that I have just placed before you? Where is the history here, you might ask, and rightfully so. I am referring to our memory, our smriti, which can loosely be explained as the beholder of our history, the carrier of our civilizational values. Doesn't the Kathopanishad exhort us with these moving lines? Anupashya yatha purve pratipashya tatha pare. That each one of us must act ruminating what our predecessors have done and what legacy we wish to leave behind. If that is the objective, then perhaps our life will be worth living intellectually, I mean. One needs to listen carefully also to these words because, as Bhartihari has said, iti kartavyata loke sarva shabda vyapashayaha yam purva ahita samskaro balopi pratipadyate. Bhartihari, the 5th century grammarian philosopher of India. The reason why I'm quoting him, he has written quite a lot on smriti, memory in particular. Memory in Indian philosophy has sadly not been, in the traditional Indian philosophy, not treated as a valid means of knowledge, but without memory, not even a perception can be complete. You can be, perhaps, what is called nirvikalpaka pratyaksha or non-conceptualized perception. You can see if you want to remain quiet, a mook, then of course you can have a pure perception as the Buddha would want us, other philosophers would want us. Even Shankaracharya wanted us to believe in that nirvikalpaka pratyaksha. Then he said, what do I do with this nirvikalpaka pratyaksha? We need to discuss it. We need to talk about it. We need to face it, perhaps talk to it. So in that sense, iti kartavyata loke sarva shabda vyapashayaha yam purvahita samskaro balopi pratipadyate. Everything that one does in this world is contingent upon the word, the sound, smriti. And this action of wording draws on impressions of the past, smells of our memory, if you like. And he goes on to say that even a child responds to that. It's not that we who have crafted our understanding and knowledge through certain training that we respond to it. Even a child needs that. Balo api pratipadyati. Even a child responds to it. The craft of writing the past, therefore, recalling memory, is agonizing. It requires threading of the wounds of the past, and so is writing history. The great Indian philosopher and my teacher Bimal Krishna Matilal suggests how one can dive into the past to retrieve the knowledge, to use it for the present and perhaps for the future. He says, and I quote, our journey into the past can never be complete and final. This is not because we can never exhaustively discover the contours of the past, the land that we have left behind, from the control of the material that we now have at our disposal. Rather, it is that we take new trips to the old land to see a new landscape from a new angle of vision. This is the narrative Baisa was talking about. It is not that we cannot always get the cartography right of the past, but that we try each time to get a new cartography. He wrote it in 1991 in a book called The Word and the World. So therefore, unless we dive into the past and ruminate it, it is difficult to craft a narrative. You have to have some substance to speak
from in order to answer. This is a fascinating subject, one can go on talking about it, in terms of a comparative intellectual tradition of India and the West. India reached the West long time ago. It struggled to reach again and again and again, but every time there was a pushback. And that pushback was possible to be pushed back by India because it has a very rich tradition. However, the effort was not enough, in my opinion. The process of writing history, therefore, even reading it, requires sifting through the materials available before us, as well as analyzing them to build a coherent and cohesive narrative. Matilal reminds us how anvikshiki, a very powerful term in ancient Indian tradition, a wonderful technical phrase which was used by Kautilya to explain the science of Indian knowledge system, can help us in bringing rigor to understanding our past. This he called darshana, or philosophy. That is Kautilya. Kautilya called anvikshiki is darshana. It is a point of view, because there is nothing else you can do but present a point of view in front of such a rich literature that is available before us in our past. The darshan is the act of philosophizing our historical narrative. Anvikshiki can present a refined understanding of being, quote unquote, of us, of the past. And this understanding is possible, as Bhartihari would tell us, through language, through text or speech, vach. That is textualization or verbalization of what there is. So even if there is a knowledge, it requires, as you said, verbalization, textualization, make a narrative, although it is a Marxist terminology, but we must use it. The better, as I said, parivad is a beautiful term. Anvikshiki is even better, but that may be a little difficult for some of us to understand and appreciate. This is invariably attained through a process which is called commentary. This I'm on Anvikshiki at the moment. I'm sorry if it is a little difficult term, meaning an understanding through elaborate method of scrutiny of a speech. This would also mean enlisting memory to draw knowledge from our past. E.H. Gombrich, the historian of ideas and ideals, the best art historian that has ever been in this world, he says, within the life of the mind I regard the humanities as representing the memory, our culture. And he's talking about the West, by the way. This is not about India. But see how similar it is, perhaps in some sense richer. Humanitas meant to the ancient world roughly anything that distinguished man from beast. And so the notion became identified with what we call civilized values. Now they are discovering in the 18th and 19th and 20th century what the civilizational values are. And just think about us. Since nobody doubted that these values had first been realized and established by classical culture, and by classical culture they can't go beyond 5th century AD. Sometimes perhaps they can, but this is what it is in terms of classical values. Since nobody doubted that these values had first been realized and established by classical culture, it was the memory of this culture which the humanities were expected to keep alive, unquote. Contrast this with the memory and tradition of India. Of course, let me briefly tell you what memory in Indian philosophy and tradition means. Memory's definition is purva anubhava janita sanskara janyam jnanam smriti. Smriti, memory, is something, the repeated experience of the past knowledge or repeated memorization of past experience. It depends how you want to look at it. That is memory. And therefore, I do not differentiate between memory and history. However, as I said, in classical Indian philosophy, I don't like the term classical, but it is used by Matilal also. Indian philosophy,
memory is not treated as a valid means of knowledge. Perception is, inference is, word is, verbal testimony is, but not memory. Because the argument given by the Nyaya and Vaisheshik was that memory has the tendency to mix up things. So, for example, if we had some experience in the past and today we are trying to recall it, it can be difficult to present an accurate memory. That's what the Naiyayikas, the logicians, said. It can either include some experience that we did not have or exclude some that we did have. And this, he says, is not a fault because a human imagination is something which is wonderful. So even if it is there's some mix-up in our representation of knowledge, it is absolutely not rejectable. However, it cannot stand the scrutiny of what is called the veridical knowledge, pramana. The only scholar who considered memory as a valid means of knowledge, would you believe it, was the disciple of Ramanujacharya, Vedanta Deshik. He has the entire chapter in his book, Nyaya Parishuddhi and Nyaya Siddhanjan, all on Smriti. And why does he do that? Look at the tradition that he's trying to draw on. He says, although our teachers, because this is also our parampara that we need to respect our teachers of the past, although our teachers have not accepted memory as a valid means of knowledge, I believe smrityahi kavayaha kavyam kavayanti. If there was no memory, the poet would not be able to compose her poetry. Smrityahi, and then he comes to his topic, favorite topic, smrityahi parabhaktyadi nishpattihi. It is only through memory that a jiva manages to recognize the Ishvara. So if you come to this bhakti philosophy, Ramanuja philosophy, then he said, if there was no memory, how would you establish the prapatti? The status of a prapatti is that the jiva, the soul, has been able to recognize the super soul or Ishvara. So that is the role of philosophical memory. But in terms of memory, and it is not for nothing that so many texts were simply called smritis. Itihasa is a term which is a convenient term, iti iha as. That is how it was. If that is, and if memory or smritis are supposed to represent that knowledge, what there is different from smriti to history that we discussed today. Anyhow, ancient Indian poets and priests and sages and philosophers have meditated on memory in a more subtle yet in a poetic manner. Here is how sage Vyasa in the Srimad Bhagavata Purana recalls the past, not just the immediate past, but a distant past, which remains intertwined with the present. In recalling the great souls of the past, Vyasa says, Tyaktva sudustyaja surep sitarajya lakshmi dharmishta arya vachasa yadagadharanyam maya mrigam dayitayepsita manvadhavan vande mahapurusha te charanaravindam. I haven't found a better definition of a Mahapurusha. Srimad Bhagavat Purana, which is being written sometime 7th, 8th, 9th century, forget about it. We Indians can knock off a couple of 100 years without any problem because we have luxury of number of years. It's a nightmare for historians, even if a year or date is missed. But that, because ancient Indian historians and writers never bothered about their time, their copyright. Who knows who wrote what? Everything is written by Vyasa. How can that be? Because this is, or even go to poets, Kalidas, such a great poet, Kwasurya Prabho Vamshaha Kwachalpa Vishayamatihi Titirshu Dustaram Mohadudupen Masvisagaram. Here I am, such a small mind, and I am about to or planning to or have desire to write story or history of a great family that is Raghu's. It is like a man who wants to cross the volatile ocean with a tiny boat. Such a great humility. Where can you find? So I am never bothered that we don't find the author of a particular text.
because that is a parampara, and every author believes there is nothing new. Janpath in the 9th century says, a great Nayayika, he says, Kuto va nutanam vastu vayamat prekshatum kshamaha vacho vinyasa vaichitra matramate vicharitam. Where can I get you new thing? Kutaha va nutanam vastu vayamat prekshatum kshama. I cannot tell you, similarly, I'm not saying anything new to you. He says, vachaha vinyasa vaichitram. The only quality a speaker, a writer has is a special way of presentation. Vachaha vinyas, a paraphrasing, representation. So memory is therefore, it's everywhere. Just as Vedanta Deshik says, if there was no memory, how would I be able to recognize my Lord, Bhagavan, Vishnu? That is the basis of philosophy, that the soul has to be able to recognize. Vivekananda acknowledged that you need to uttishta jagrata. He would say, get up, recall what you are and what you were. So in that context, this tektva sudustija surepsita raja lakshmim dharmishta arya vachasa yadagadharanyam maya mrigam daitayepsita manvadhavan vande Mahapurushate charanarvindam. I haven't found a better definition of Mahapurush. He says, a Mahapurush, or the great soul, is the one who, to honor the words of his father, goes away to the forest, giving up the dazzle and the glory of the real kingdom, without any sense of loss or unease. You need to read chapter 16, 17, and 18 of the Ayodhya Kand of the Valmiki Ramayana to realize what this simple verse in the Bhagavata Purana is saying. An act so difficult to follow because even the gods desire to gain such a kingdom. Surepsita. The gods want to have such a kingdom. And he can give up without an. And the same person would later chase an unreal, illusionary deer only because his beloved wished him so, only to humor his beloved. That is the level of Mahapurush. That you can play a game, not a real life, in order to... And this is not it. This is Srimad Bhagavat Purana is writing history, is recalling the history of the previous avatar of Krishna, by the way, if you look at it. In the 11th chapter, 11th skanda of Srimad Bhagavat Purana, in the 6th chapter, you find this verse there. And it's an amazing verse. And he says, Vande Mahapurusha. That is a Mahapurusha. As I said, read. When Rama is about to go to the forest, his mother is very perturbed and disturbed. Why do you have to go? I don't want you to become the king, but I don't want you to go to the forest. You are the only child. I am the queen. I am ordering you not to go. He said, no, I have to go. I cannot violate the words of my father. And there's a long, 2-chapter long discussion between Ram and his mother Kausalya. And then he says, do you really want me to do what you want me to do? He says, Yasho hyayam kevala rajya karanat na prishthatah kartumalam mahodayam adirgha kale natu devi jivite vrini varamadya mahima dharmata. Do you really want me to accept a very paltry kingdom of Ayodhya by abandoning the great dharma? I am sure, my mother, you do not want me to do that. Now, it is in that context that Srimad Bhagavat Purana, when you read these contexts and come to this conclusion, and just about that time, a little before that, Bhavabhuti, just before or around the time Srimad Bhagavata Purana is being composed, Bhavabhuti says something more remarkable. Sita is happily pregnant. She is putting her head on the lap of Ram, and he is stroking the head. This is drama, of course, in Uttara Ramacharitam, because she is in pain and he is stroking her head. A message from Vasishtha comes, and the message is, I hope you are looking after the kingdom as you always have thought of. You know how he responds? He said, go and tell Guruji, Sneham dayam cha saukyam cha yadiva janakim api aradhanaya lokanam munchato nasti me vitha. If I have to give up my sneha, my attachment, my compassion
my friendship, sneham, dayam cha, saukyam cha, yadiva. And ultimately, if I have to give up, this is a precursor to Sita going to the forest. Yadiva Janaki mapi. To him, nothing was more important than Janaki. For some of us, that nothing is more important. So he says, Yadiva Janaki mapi aradhanaya lokanam. If the people have any doubts, I shall even give up on Sita. I'll abandon Sita. That is the level. So I'm brooding on Mahapurusha. These are multiple examples, hundreds of examples from texts throughout in Smriti, in the literature, whether it is in Kalidas. So many verses are coming to my mind. But however, so this is the kind of Mahapurusha tradition that we have had. And the other thing is, this is how history is retrieved. The previous Janma of Krishna is retrieved. If this is not writing cultural and intellectual history of India, what is? The same emotions, the same definition of a historical figure of India is brilliantly crafted in a simple yet powerful language by the 16th century philosopher and historian. People don't like it, but I call him 16th century philosopher and historian, Saint Tulsidas. If he's writing the story of Ram, he is a historian. What does he say? This almost same thing. Nigama neti, Shiva dhyana na pava, maya mriga, pache sodhava. The person whom the Vedas fail to capture fully, even the Lord Shiva struggles to arrest him in his meditation, is today chasing an unreal deer. It's an amazing story. If you were to ask me how I would describe this level of pure emotion, I would recall Martin Buber, the great Israeli historian and philosopher who was deeply inspired by Vedanta. And he says, and I quote, "Feelings dwell in man, but man dwells in his love. That is no metaphor, but the actual truth. Love does not cling to the I in such a way as to have the thou only for its content, its object." Martin Buber he called himself a Vedantin, but a great writer and philosopher. This is how he said, this is how I would describe India. That it's not for I, the world is not my object. I am an action in the world at the most. The tradition of Indian system promoting knowledge and preserving memory remains unparalleled in the world. It is called the sutra system of knowledge, the capsules of knowledge, or to use a genetic terminology, the nuclei of the cells of knowledge. This is a phrase given to me by my wife. I'm not a scientist, she is. I don't know whether I'm correctly pronouncing it. The nuclei of the cells of knowledge, where knowledge was nurtured and preserved to be passed it on to the next generation through individual and collective memory. This knowledge is veridical in the sense that people whose job it would be to interpret these sutras through elaboration or recalling memory would compose, write bhashya, mahabhashya, tika, upatika, vyakhya, etc. There's no time, there's a reason why these terms have been used for a particular kind of interpretation, and all of it is recalling the memory. This process of uncovering or unpacking, to use the modern terminology of knowledge, is historicizing the past. Expansion of these is called Sutrotkartha Parpanchanam. The prapancha of the meaning of sutra. Sutrartho varnati yatra sutranusaribhihi swapadani cha varninte bhashyam bhashya vidu. When you follow a sutra tradition and interpret that knowledge, that is what is called the preservation of memory. The practice would lead to composing vartikas, short commentary or sub-commentary, a shorter interpretation of knowledge. It would mean preserving and presenting alternative interpretation. Later, the tradition of the Nibandhas would bring about a higher level of commentaries which initiate different and these different levels of knowledge and revisions of the original interpretations. And that is where I call the samvada.
Samvada comes later. Parivad, when you try and engage with different knowledge systems. This system of preserving knowledge for posterity has a rigorous scientific discipline and practice. Such an historicization of the past through memory has enriched India's intellectual tradition. It is this tradition which Sri Aurobindo calls the discovery of Dharma, which began from the period of Ashoka and continued till the arrival of the British in India. Aurobindo says that, and I quote, that scholarship as yet only deals with a fraction of what is still lying extant, and what is extant is only a small percentage of what was once written and known. Such is a deep and rich knowledge tradition that Aurobindo is talking about. He's talking about the Renaissance. This is from his book, The Renaissance in India. I borrowed it from Priyanka ji the other day, again to get the reference. This discovery, Akbar, his grandson Shah Jahan, and his great-grandson Dara Shikoh too, were drawn towards this intellectual tradition of ancient India. All three either arranged for translation into Persian or of the great works in Sanskrit, that is the Ramayana, the Mahabharata, and other works, Panchatantra too, Bhagavad Gita separately. The works that are of great value in Indian civilization and culture. One is not sure whether these Mughals rulers were attracted to these scriptures and epics because of their civilizational and ethical values, or because, like the British colonial scholars, they also wanted to study these texts to understand the minds and emotional attachments of the Hindus to their civilization so that they could get a better hold over their subjects, largely. These are two. I rest my case. I don't want to take any side. I have a view. Nevertheless, this is a tradition which must be acknowledged. Sri Aurobindo makes a distinction because he talks about the knowledge system that begins from Ashoka and comes up to the medieval period. And therefore, I quoted that this tradition of translation, and the act of translation is not a mere translation, it is a cultural translation. Therefore, all those translations will have their own value for us to read in order to appreciate our own translations. Sri Aurobindo makes a distinction between writing and writing down, and goes on to say, because there is a difference, when was it written? And I'm quoting him here, there is no historical parallel for such an intellectual labor and activity before the invention of printing and the facility of modern science. Invention of printing. So was nothing written before printing? And this distinction is made not only, and yet all that mass of research and production and curiosity of detail was accomplished without these facilities and with no better record than the memory, he says. This, I want just a brief digression from here, and only to quote what Arvinda is saying, what others have said. You know, until the time of Plato, Homer was memorized by everybody in that land. And there was an annual prize for the person who could recite the entire Homer without any fault, without any fluff, without any mistake. And there is a saying where Plato is supposed to have said, it is a melancholy that Plato is being written down. This is why I'm talking about memory, that writing down is different from writing. The Vedas were written or received. The Upanishad, the Brahmana, the Aranyaka, all these texts were written. And if we go by where is the written record, it is there in us. Purva Anubhava Janita Samskara. That is what I'm talking about. There is another unique quality of India's intellectual tradition, and it is writing our history in the form of telling stories. Katha, Kaha, Kahini, Kahani. All these terms are, without that, India will not be complete. Whether it is the story of Rama, Krishna, the stories of the Mahabharata, or even the exposition of highly refined philosophical truths, all of them involve
telling and retelling, asking questions to seek answers and to seek the truth. Writing history is also making an attempt to answer questions, to satisfy curiosity, to remove doubts. Thus, the questions become an integral part of such a conversation. The Ramayana and the Mahabharata, the oldest record of India's cultural, economic, and social history, begin as stories, as questions and answers. After all, sage Valmiki opens his magnum opus by asking questions, the questions which are then answered by the celestial beings Brahma and Narada. In fact, Brahma advises Valmiki to write the story of Rama, which befits the beautiful language and poetry which Valmiki has produced through an agonizing experience on the bank of the river Tamasa. Kuru Rama Katham Punyam Shloka Baddham Manoramam. This is what Valmiki is supposed to have been told by Brahma. Brahma then goes on to promise to Valmiki that if the latter were to complete the story of Rama, it would be told among the people for as long as the mountains and the rivers shall endure upon this earth. Yavat sthasyanti gireha saritascha mahitale tavad Ramayana katha lokeshu pracharishyati. The story of the Mahabharata would be composed in the same fashion too. And what about the Upanishads, the texts that espouse the deep knowledge of the truth about the self, Atma? Whether it were the conversation between Yagyavalkya and Maitreyi, between Nachiketa and his father Vajasavas, and between Nachiketa and Yama, all would follow a very well-defined pattern of storytelling. The questions are necessary to clarify doubts, as I said, and the doubts lead to seeking knowledge, whether it is the knowledge of the past or of the journey of the self itself, which may involve even future. India did not leave out future. Not only that, there is an entire Upanishad named Prashnopanishad. Memory, therefore, becomes a vital nucleus of history. There is a scene in the Abhigyana Shakuntala of Kalidasa where King Dushyanta claims that memory retrieves the knowledge even of the past lives. Ramyani viksha madhuransha nishamya shabdan paryutsukhi bhavati yatsukitopi jantuhu tachetasa smarati nunam abodha purvam bhavasthirani jananantara sauhridani. Even of the past lives can be recalled if the memory is triggered. That history is telling a story of the past makes the writing of history even more poignant. I'll close within 5 minutes, don't worry. God's up, keep the time. And every story must have a worthy and attentive listener, a listener who responds to the teller. That too is the nature of narrating his story. In the Sri Krishna Karnamrita, Mother Yashoda is reciting for baby Krishna his bedtime favorite story. And what a story it is. Ramo nama babhuvahum tadabala sitetihum tau pitur vacha panchavati tate viharata stamaharat ravanah nidrartham janani kathamiti harer hunkaratah shunvatah saumitre kwadhanur dhanur dhanuriti vyagragiraha pantuvah. This is a different beautiful beta, but what is being said? Let me try and capture in the translation. We all have heard when we were told stories, if you don't say whom, people get upset. If somebody says, then you need to, and the poets even today keep exhorting, Tali mil jaye to bada acha rahega. So this is what is happening. Yashoda is telling the story. There was a prince called Rama. He had a wife named Sita. Baby Krishna responds to his mother with a hunkara. The two of them then went to the forest on the instructions of Rama's father. Mother Yashoda continues with the story and baby Krishna continues to respond with hunkara. In the forest then Ravana abducts Sita. As Mother Yashoda reaches this point of the story, baby Krishna had already dozed off. And instead of hunkara, Krishna begins to shout, "Where is my bow, O Lakshmana? Where is my bow? Where is my bow?" This is also recalling your past life. Saumitre kwadhanur dhanur dhanuriti. Suddenly, in his sleep, or rather half asleep, Krishna is recalling his past life.
May this anxious voice of Krishna protect you. That is the objective. What do we make of this story, this narrative? The memories of the past, even of the past lives, are anxious to be brought back to life, here and now, because that is the real story of our lives. History is therefore a story of memory. Thank you very much. आभार गुरुवर। दर्शन शास्त्र और संस्कृत भाषा के अध्येता अभी प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी के विचारों से निस्संदेह हम लाभान्वित हुए हैं। पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव, भाषा और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य ही भारतीय संस्कृति का पर्याय है। आज हमारे बीच श्रद्धेय सम्माननीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी विराजमान हैं, जिनकी उपस्थिति किसी अनुष्ठान से कम नहीं। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ उनके विचारों को आपको संबोधित करें। आदरणीय हीरामन तिवारी जी के भाषण के बाद या व्याख्यान के बाद मुझे कुछ कहना चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर देवेंद्र स्वरूप जी होते तो हीरामन तिवारी जी को गले लगा लेते और इनसे कहते कि आपने अपना भाषण या व्याख्यान अधूरा किया है, उसको पूरा करिए। इसलिए आपने जो बोला है वो पुस्तिका के रूप में छप करके आएगी। हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये विषय ऐसा है जो आगे चलते रहना चाहिए और इसलिए वो ठीक ही कहा यति जी ने कि हम लोगों को एक मणि मिल गई है। तो हीरा मन नहीं, हीरा मणि तिवारी जी हम लोगों को मिल गए हैं और जेएनयू के जंगल में मिल गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। वहाँ ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं। और आपकी श्रीमती जी की उपस्थिति के बावजूद आपने बहुत उनके बोझ से बिल्कुल मुक्त होकर के बोले। नहीं भटक नहीं रहे थे। तो मैं देवेंद्र स्वरूप जी को आजकल बहुत याद करता हूँ और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उनको मैं याद नहीं करता। और उसका कारण ये है कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता जिनसे हम कुछ सीख सकें या उनसे बहस कर सकें। देवेंद्र स्वरूप जी की उम्र करीब 100 थी, यानी 8-9 साल कम था, लेकिन पत्रकारिता के विद्यार्थी या किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों का समूह उनके पास जब जाता था तो थोड़ी देर नहीं, कई घंटे उनसे वो बात कर पाते थे और उन बच्चों को भी, उन विद्यार्थियों को भी लगता था कि हम एक अपने गुरु के पास पहुँचे हैं और हमको कुछ ज्ञान मिला है। देवेंद्र स्वरूप जी केवल इतिहासकार नहीं थे, एक दार्शनिक भी थे, तत्ववेत्ता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस विचार भूमि पर वे खड़े थे उसको भी क्रिटिकली देख सकते थे। ऐसे मुझे केवल दूसरे व्यक्ति मिले, धर्मपाल जी। धर्मपाल जी
को गांधी की धारा का मानते हैं और थे भी। गांधी जी को वो हनुमान का अवतार मानते थे। लेकिन गांधी जी को या गांधी जी के लिखे को जितना क्रिटिकली धर्मपाल जी ने देखा है उतना और किसी गांधीयन ने नहीं देखा है। ठीक उसी तरह से मैं तुलना दोनों की कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देवेंद्र स्वरूप जी ने भी जो राष्ट्रीयता की विचार भूमि पर वो खड़े थे, लेकिन जहाँ भटकाव होता था वहाँ वे टोकते थे, लिखकर टोकते थे। और उनकी जो किताबें अभी उपलब्ध हैं, जैसे पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मीडिया में, चाहे वो जिस तरह की मीडिया हो, सब में एक सीधा सा गणित लोग बैठा रहे थे कि किस पार्टी ने किस जाति के कितने वोट अपने खाते में कर रखे हैं। और तब इसके मर्म को समझने के लिए मैंने देवेंद्र स्वरूप जी की एक किताब, दो किताबें निकाली। एक उनकी पुस्तक है जाति व्यवस्था पर, और दूसरी पुस्तक है उस समय यानी आज़ादी के समय में जो आरक्षण को लेकर के, खास करके हरिजनों के आरक्षण को लेकर के जो बहस चली थी उस पर। और दोनों किताबों में जो के लेख हैं और जो उसमें उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ते हुए मैंने ये महसूस किया कि उनका हर लेख आज भी प्रासंगिक है, पढ़ा जाना चाहिए। और इतने गहरे शोध के बाद लिखा गया है कि उसे अगर आज भी पढ़ें तो समझ सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं, क्यों हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इन समस्याओं से हम निकल कैसे सकते हैं। तो उस देवेंद्र स्वरूप जी को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके स्मृति में आज जो व्याख्यान हुआ है, चौथा व्याख्यान, मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र स्वरूप जी को अभी उनके सुपुत्र रंजन जी मुझे बता रहे थे कि उनकी दो किताबों, यानी उनके अभी जितना कुछ उनकी पुस्तकें छपी हुई हैं उसके अलावा बहुत कुछ है जो वो छोड़ गए हैं। और ये इन्होंने उसमें से एक पुस्तक तो एडिट करके निकाल भी दी है, अब वो छपने के लिए की प्रतीक्षा है। उसी तरह से दो पुस्तकों पर और ये काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र स्वरूप जी की जो पुस्तकें उन्होंने कला निधि या कला केंद्र को दिया है, वे तो उनके संग्रह का हिस्सा है, लेकिन देवेंद्र स्वरूप जी की अपनी जो पुस्तकें हैं, उनका जो लेखन है, वह नई पीढ़ी के पास कैसे पहुँचे, इसके बारे में भी हम लोग सही समय पर सोचें। और ये अवसर है जब हम देवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति को नमन करते हुए और इस अवसर को एक पवित्र अवसर के रूप में हम हर साल मनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आभार गुरुवर आपका। सोचती हूँ मैं आपकी कटिबद्धता पन्नों पर उतार लूँ, सोचती हूँ आपकी कटिबद्धता पन्नों पर उतार लूँ, आपके मुख से निकले अल्फाज दिल में संभाल लूँ। हे क्रांति दूत, आपकी बातों को जीवन में उतार लूँ, सोचती हूँ मैं आपको ही पन्नों पर उतार लूँ। आभार गुरुवर आपका।
आज का ये कार्यक्रम अपनी सफलता का उत्सव मनाते हुए यहीं संपन्न हो रहा है। मंचासीन सभी मनीषियों का हृदय से आभार। आप सभी सभागार में उपस्थित स्नेहशील स्वजनों का और प्रशासन के सहयोगी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनका प्रशंसनीय योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा। कला निधि विभाग में कार्यरत श्रीमती रंजना चक्रवर्ती, उनके सहयोगी, विशेष तौर पर पूर्व नियोजित योजना के लिए सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का कोटि कोटि आभार, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष, जिनके सानिध्य की शीतल प्रेरणादायक उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं सेवा एवं आपूर्ति विभाग, मीडिया यूनिट, लेखाधिकारी, फोटोग्राफी के लिए सभी का धन्यवाद देती हूँ। फिर से मिलने की मंगल कामना के साथ, महफिल में रंग बिखेर जाती है वो चाय ही है जनाब, जो लोगों को एक साथ बैठना सिखाती है। आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं।